वेलकम बैक टू रिएक्शंस परफेक्शन। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका नाम है टाटा बिजनेस एम्पायर 100 कंट्रीज टाटा, हाउ बिग इज टाटा। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फिर मेरे ख्याल में वीडियो भी शुरू कर देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। Bombay House. This is a simple looking head office of the Tata Group in Mumbai, India. But Tata Group is anything but simple. Started as a small trading company by Jamshedji Tata in 1868, Tata Group now has more employees than Toyota, Coke, Facebook, Microsoft, and Google combined. It now operates in over 100 countries. So let's tighten our seatbelts and take a world tour to witness the remarkable business empire of Tata Group. Our first stop is North America. Here Tata Group owns the luxury hotel Taj Campton Palace in San Francisco, Taj Boston, and one of the world's finest and New York's iconic hotel, The Pierre. Tata's Tetley Tea is the second largest tea company in US and largest in Canada. They also own popular brands like Good Earth and America's third largest coffee very company, big business here. 8 O'Clock Coffee. Tata's IT service company, TCS, operates 24 offices in North America. And while their animation and design lab, Tata Elixir, also operates in 8+ locations in the region. In manufacturing sector, the group operates a soda ash mining company in Wyoming, America, iron ore mining Canada, company in Quebec, Canada, steel steel manufacturing manufacturing. facilities in Ohio and Pennsylvania, क्या है? and also a coffee production plant. In all, क्या चीज़ Tata नहीं Group है? employs North America में 20,000 20,000 इनके people employee हैं. in North America, about 3 times more than how many people Oh. Microsoft employs in India. Now let's travel to South America. TCS employs more than 8,000 people in 8 countries in South America. The group is also an investor in the first submarine fiber cable network Wow. between US and Brazil. ब्राजील और यूएस के दरमियान सबमरीन केबल के भी World's largest subsea fiber cable network. Today, 25% of world's internet routes travel over Tata's subsea networks. From South America, let's travel to Africa and land in the port city of South Africa, Cape Town. Here, Tata Group owns the historic यार जो कुछ अभी तक मैंने देखा उससे तो मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा हूँ इस बात से कि दुनिया के बड़े बड़े बिगेस्ट कंट्रीज के अंदर इनका बिजनेस है और एम्प्लॉयज़ भी बेशुमार हैं इनके। और जिस तरह से ये ग्रुप दुनिया में काम कर रहा है बिजनेस के हवाले से, तो मेरे ख्याल में दुनिया की, इंडिया की इकॉनमी में खास तौर पे इसका तो बहुत बड़ा हिस्सा है यार। वीडियो के स्टार्ट में उन्होंने बताया ना कि जितने बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, यानी फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट, इनसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ टाटा के पास है, यानी कि बहुत बड़ा एम्पायर है। मेरे ख्याल में हर बिजनेसमैन का ख्वाब होगा कि हम इसी तरह टाटा की तरह बिजनेस करें। तो लेट्स luxury hotel Taj Cape Town. In nearby Zambia, they own Taj Pamodzi, होटल्स का बिजनेस बहुत luxurious है। hotels of the country. Tatas also operate wind farms in South Africa and a hydroelectric power project in Zambia. The group also owns Jokels, South Africa's third largest tea company. Tata trucks and buses are one of the top sellers कौन in सा बिजनेस है Zambia, जो नहीं छोड़ South किया है इन Africa, लोगों ने? and Kenya. In manufacturing sector, Tata owns a chemical Chemical plant, plant in Magadi, Kenya. Kenya, which is Africa's largest soda ash manufacturer, commercial vehicle assembly plant, and a steel plant in South Africa, and finally a manufacturing and a power plant in Mozambique. ऐड आ गया 5 seconds and now we skip. From Mozambique, we will move to London, Buckingham Palace, Queen's official residence. Close to the palace, Tatas own the luxurious Taj 51 Buckingham Gate Suites. The hotel also has the world's first Jaguar suite for all the Jaguar lovers. Nearby, the St. James Court Hotel is also owned by the Jaguar lovers. Tata's Tetley
is the largest tea company in the UK. Their other European tea brands include Vitex, a popular brand टी in की भी बहुत बड़ी कंपनी टी एंड होटल्स. the market leader in Czech Republic, and Grand, a coffee brand in Russia. Tata Steel is one of Europe's यूरोप largest को बड़ा steel कवर किया maker, है and बिजनेस में. TCS किसी कंट्री में has कैसा been बिजनेस है, known किसी as the कंट्री में best कैसा employer बिजनेस है. in Europe. Jaguar TCS Land की Rover is also owned by Tatas and is the largest manufacturer of premium vehicles in Britain. The group also operates design centers in London and Paris, and one of the Auto cars world's की भी largest manufacturing है. owning company in UK, Germany, and Switzerland. Tata employs around 60,000 people in Europe and is also UK's biggest industrial employer. To end it all, 60,000 people. also own a relatively small company called British Salt in the UK. An Indian company owns British Salt. Quite ironic if one remembers Gandhi's Salt March carried out against the British Raj only 88 years ago. Now let's travel all the way to Sydney, Australia. Here in Sydney, TCS began its first operations in Australia, and now the company operates across Australia and New Zealand with over 10,000 employees and clients like Qantas, Telstra, and Commonwealth Bank. Tatas also own popular Australian कमाल है यार, machine कमाल. brand MAP and operate data centers across Oh, Australia through their partnership with NextDC. The group also holds stake in Scarborough Downs coal project Very in huge Queensland, Australia. organization है ये. Finally, we have reached Asia. Let's start कितने लोग इससे वो है, sands चलिए. of the Middle East. Tata's Range Rover is one of the most sought after four-wheel Middle East drives में आ गए. in the region. Tata Motors Oh, Range is Rover. also a leader in the Four-wheel medium drive. वाह यार, and ये भी heavy manufacturing commercial है. vehicle segment in GCC countries. While TCS has multiple offices in Heavy- the Middle East, heavy including trucks, an machinery. all-women IT services center in Riyadh, Saudi Arabia. The group also owns Titan. Titan watches are leading brand in Oman and Bahrain. They also own logistics Titan watches, company yeah. in UAE and the luxurious city बना रहे. hotel Taj Dubai near popular landmarks like Palm Jumeirah. Finally, Voltas, Tata's leading air conditioning brand, has completed major mechanical and air conditioning projects that include Burj Khalifa, Dubai, international airports in UAE and Bahrain, Ferrari Experience, and F1 racetrack in Abu Dhabi. Southeast Asia. From deserts of UAE, we will move to South Korea. Here, Tata यार मेरे ख्याल में दुनिया की इकोनॉमी में टाटा का बहुत बड़ा हिस्सा है. बहुत बड़ा चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है. और ज़ाहिर बिलियन ऑफ डॉलर्स इनके एम्प्लॉयज़ हैं, इनको सैलरीज दी जाती हैं. और उसके बाद फिर उनका जो प्रॉफिट है वो इंडिया में ज़ाहिर है जब आता होगा तो उनका जीडीपी, उनका इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा हाई होएगा. और जिस तरह का ये बिजनेस है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया को इन्होंने बिल्कुल कवर किया हुआ है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के आज से अंदर. पहले सिर्फ टाटा का नाम सुना था, अब काम का भी टाटा पता का लग नाम सुना गया. था, लेकिन टाटा के जो बिजनेस है, जो Businesses उनके हैं. काम है, वो तो अब पता लग रहे हैं. owns South Korea's second largest heavy commercial vehicle manufacturer, Tata Daewoo. In Singapore, Tata's steel plant is the largest single cut and bent steel operations worldwide, while the group is also the largest producer of long steel products in Thailand. Tatas also own stake in oil and gas blocks and coal reserves in Indonesia and are developing power generation projects in Myanmar and Vietnam, and even operate a life sciences research company and own plantations in Singapore and Indonesia. Even Tata's Voltas has executed engineering projects like New Hong Kong International Airport and Cyberport Business Park in Hong Kong, China. Here, TCS has 6 global delivery centers. Tata's own 2 rolling mills, a refractories factory, an auto parts factory, green tea manufacturing plant, and also have a Jaguar Land Rover assembly plant. We have फिर आ गया है. क्या कमाल का वीडियो है. बड़ा इंफॉर्मेशन मिल रहा है.
reached South Asia, the beautiful and scenic Maldives. Here we will find the lush Taj Coral Reef Maldives. with white sands and scenic view. Moving ahead to Sri Lanka, Taj owns the picturesque Taj Bentota and 2 more hotels in Colombo. Tata's also provide Hotels का business बहुत telecommunication services in And Nepal luxurious and hotels. Sri Lanka, and have even deployed a hydro project in Bhutan. After our long जहाँ स्पेस मिला इन्होंने बिजनेस किया वहाँ. finally reached India. Here, TCS is the largest Indian company TCS becomes the first Indian company to hit $100 billion in market cap. Tata Motors is a leader in commercial वो vehicles मार्केट कैप $100 बिलियन का TCS. as largest manufacturer of branded watches. Tata has also run largest jewelry store chain Tanishq, while their Tata Power is India's largest integrated power company. Tatas also own steel plants, tea plantations, automobile manufacturing units, chemical factories, and even own mobile networks and DTH company Tata Sky. Not only that, they operate airline Vistara and also manufacture defense helicopters and equipment. Airline business. Even Starbucks in India हेलीकॉप्टर भी is बना रहा है jointly डिफेंस owned के. by the Tatas. Tata has not only created a massive business empire but also multiple social institutions like cancer treatment centers, mathematics सोशल भी काम कर रहा है. सोशल research institutes, and also the first planned industrial city of India, Jamshedpur. 66% of the group shares are held by a charity trust. Across the world, the company has been involved in multiple social programs. Tata is truly an incredible company and has traveled a long way from Mumbai to be now present all नो डाउट. across the world. All I can say is this is Tata's business empire. वाओ इनक्रेडिबल. क्या वीडियो दी है. दुनिया भर को कवर किया है मुख्तलिफ बिजनेसेस में. होटल्स के अंदर, कम्युनिकेशंस के अंदर, ऑटो के अंदर, ज्वेलरी के अंदर और कम्युनिकेशंस के अंदर. मेरे ख्याल में तो उन्होंने कोई बिजनेस के कोई ऐसी वो चीज़ नहीं छोड़ी. बाकी चाय, टी, एयरलाइंस एयरलाइन है, डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं. यार ये एक ऐसा एम्पायर है जो मेरे ख्याल में एक किसी भी छोटे कंट्री की इकोनॉमी को रन कर सकता है. इतना बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस है इनका. तो ये तो बड़ा इम्प्रेसिव. और यार उस शख्स के लिए ख्वाब होगा कि मैं भी टाटा की तरह एक बिजनेसमैन बन जाऊं, कोई ऐसा बिजनेसमैन बन जाऊं जो बिजनेस करता है. तो जो दुनिया भर में एम्प्लॉयज़ है जिनके बेशुमार, जो इनका रोजगार चल रहा है उनसे, वो अपने साथ अटैच किया. और कमाल का. फिर बाद में सबसे अच्छी बात यह है कि उनका सोशल वर्क बहुत अच्छा है. चैरिटी का काम बहुत अच्छा किया. मेरे ख्याल में अब हमें वीडियो ऐड कर देना ऐड चाहिए. कर देना चाहिए. और इसके साथ ही अगर कोई आपको मज़ीद कोई हमने कोई वीडियो आप बताना चाहें कि हम उस पर अपने रिएक्शन दें तो कमेंट्स वगैरह में आप लिख दीजिएगा. तो तब तक के लिए हम लोगों को गुड बाय.